ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। रूस ने तोड़े यूक्रेन के 2 हिस्से। UNSC ने बुलाई मीटिंग। यूक्रेन च फसे भारतीय ਲਈ एयर इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। कैनेडा USA सने विदेश जाने ਲਈ 15 मार्च ਤੋਂ हटेगी पाबंदी। कोरोना तो पहला वांग होणगीਆਂ उड़ानां। रूस के कदम नाल वधे तनाव कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, असीं किसी तो डरदे नहीं। सरकार की वड्डी कार्रवाई। सिख फॉर जस्टिस के ऐप्स ते वैबसाइट कीतियां ब्लॉक। चंडीगढ़ च 3 दिनों लिए बिजली हुई बंद, पानी की सप्लाई हुई ठप, हड़ताल ते गए मुलाजम। रूस च छिड़ी जंग। राष्ट्रपति पुतिन ने फौज नूं यूक्रेन च दाखल होने दे दिते हुक्म। यूक्रेन तो 256 विद्यार्थी अज भारत देश च परतणगे। PM मोदी ने मणिपुर च जनतक मीटिंग नूं कीता संबोधन। आओ शुरुआत करते हैं अज की इस पहली वड्डी खबर तो। यूक्रेन तो घुसपैठ करने वाले 5 घुसपैठियां नूं मारिया गया। रूस ते यूक्रेन दोवें ही राजनीतिक कूटनीतिक तरीके नाल युद्ध नूं टालण दी कोशिश कर रहे हैं, पर जंग छिड़न दे आसार वधदे जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उसकी सरहद विच दाखिल होकर नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के 5 फौजियों को मार दिता गया है। मौजूदा तनाव कारण रूस तो यूक्रेन की सरहद से लगभग 1,50,000 सैनिक तैनाती है, जो उसने ठंडे मौसम तो बाद की है। उसने पूरब विच डोनबास, उत्तर विच बेलारूस और दक्षिण विच क्रीमिया की सरहद से अपनियां फौजां तैनात कीतियां हन, जदों कि रूस का दावा है कि फौजी विकास हमेशा फौजी अभ्यासां कारण होया है ਅਤੇ यूक्रेन ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। रूस ने तोड़े यूक्रेन के 2 हिस्से। UNSC ने बुलाई मीटिंग। रूस वालों यूक्रेन के 2 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। The provisional agenda for this meeting is letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council S/2014/136. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Germany and Ukraine to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you. Mr. President, it's with great concern and sadness that I brief the Council this evening on the unfolding dangerous situation in and around Ukraine. In his statement today, the Secretary General was clear. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to recognize the independence of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. We very much regret this decision, which risks having regional and global repercussions. We also regret the order to deploy Russian troops into eastern Ukraine, reportedly on a peacekeeping mission. These developments follow the decision to order a mass evacuation of civilian residents of Donetsk and Luhansk into the Russian Federation. We are concerned by the escalating shelling across the contact line,
reportedly leading to a number of casualties. OSCE's Special Monitoring Mission has recorded a total of 3,231 ceasefire violations in the Donbas area from 18 to 20 February. 1,073 ceasefire violations, including 926 explosions in the Luhansk region, and 2,158 ceasefire violations, including 1,100 explosions in Donetsk region. We remind all involved of their responsibilities under international humanitarian law and human rights law. Although the United Nations is not in a position to verify the numerous claims and allegations made by various actors, we are deeply concerned about the reports of civilian casualties, targeting of civilian infrastructure, and ongoing evacuations. Mr. President, we are extremely concerned about the possible implications of the latest developments for the existing negotiation frameworks. Amid the current risks and uncertainty, it is even more important to pursue dialogue. Negotiation is the only way to address the existing differences among the key actors regarding regional security issues and the settlement of the conflict in eastern Ukraine in accordance with Security Council Resolution 2202. Before the current already dangerous conditions escalate further, we call on all relevant actors to focus their efforts on an immediate cessation of hostilities. Civilians and civilian infrastructure must be protected, and actions and statements that may worsen the situation must be avoided. Over the past few weeks, key actors have been engaged in intense diplomatic efforts to avert a new eruption of conflict in the heart of Europe. The Secretary General fully supports these efforts and has deplored even the possibility that a new conflict could break out. Mr. President, we are committed to our long-term partnership with Ukraine, a founding member of the United Nations, as it continues to pursue the democratic reform agenda 30 years after independence. And once again, we reiterate the full commitment of the United Nations to the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, according to General Assembly resolutions. Throughout the 8 years of conflict in eastern Ukraine, the United Nations has continued to provide life-saving humanitarian support to all in need, as well as human rights-related work. During this difficult period, we are committed to stay and deliver and remain fully operational in Ukraine, including in the Donetsk and Luhansk regions. The safety and security of our staff must be respected by all parties. Mr. President, the next hours and days will be critical. The risk of major conflict is real and needs to be prevented at all costs. I can assure you of the full commitment of the Secretary General to work toward a diplomatic resolution of the current crisis. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the Permanent Representative of the United States. Thank you, Mr. President. Since World War II, the United Nations Charter, the key tenets of which this council is mandated to uphold, has stood as a bulwark to the worst impulses of empires and autocrats. Earlier today, Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxies since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense.
We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment, and we must not look away. History tells us that looking the other way in the face of such hostility will be a far more costly path. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law, and it defies our charter. What is more, this move by President Putin is clearly the basis for Russia's attempt to create a pretext for a further invasion of Ukraine. The consequences of this action will be felt far beyond Ukraine's borders. We do not have to guess at President Putin's motives. Today, President Putin made a series of outrageous, false claims about Ukraine aimed at creating a pretext for war, and immediately thereafter announced Russian troops are entering the Donbass. He claimed that Ukraine is seeking nuclear weapons from the West. This is not true. Ukraine is, in fact, one of only 4 countries to have voluntarily surrendered their nuclear weapons. The United States and our allies have no intention of supplying nuclear weapons to Ukraine, and Ukraine doesn't want them. And then President Putin asserted that Russia today has a rightful claim to all territories from the Russian Empire, the same Russian Empire from before the Soviet Union, from over 100 years ago. That includes all of Ukraine. It includes Finland. It includes Belarus and Georgia and Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Lithuania, Latvia and Estonia. It includes parts of Poland and Turkey. In essence, Putin wants the world to travel back in time, to a time before the United Nations, to a time when empires ruled the world. But the rest of the world has moved forward. It is not 1919. It is 2022. The United Nations was founded on the principle of decolonization, not recolonization. And we believe the vast majority of UN member states and the UN Security Council are committed to moving forward, not going back in time. The consequences of Russia's actions will be dire across Ukraine, across Europe, and across the globe. In our past 2 meetings on Ukraine, I've mentioned nearly 3 million Ukrainians will need food, shelter, and life-saving assistance right now. The UN estimates the humanitarian toll will expand significantly should Russia further invade. Already, Russian proxies dramatically increased shelling and artillery fire over the weekend, killing Ukrainian civilians and soldiers. If Russia invades Ukraine even further, we will see a devastating loss of life, unimaginable suffering. Millions of displaced people will create a refugee crisis across Europe. Nevertheless, Russia has declined repeated entreaties to state its intentions before the world, including by Secretary Blinken in the Security Council last Thursday. Colleagues, President Putin is testing our international system. He is testing our resolve and seeing just how far he can push us all. He wants to demonstrate that through force, he can make a farce of the UN. We must act together in response to this crisis. Over the past few weeks, the world has heard the other 14 members of the Security Council speak with one voice, asking Russia to pursue diplomacy. Other members of this council, even those who often align with Russia on other matters, have been clear that the sovereignty, independence, and territorial integrity of every UN member state should be respected and safeguarded, including Ukraine.
that this is a basic norm of international relations and that it embodies the purpose of the UN Charter. The sequence of events that Secretary Blinken spelled out for this council last Thursday appear to be proceeding exactly as he predicted. Today, President Putin has torn the Minsk agreement to shreds. We have been clear that we do not believe he will stop at that. In light of President Putin's latest actions, we must all stand up for the principles upon which this organization was founded. President Biden issued an executive order today that will prohibit new investment, trade, and financing in the so-called DPR and LPR regions. Tomorrow, the United States will take further measures to hold Russia accountable for this clear violation of international law and Ukraine's sovereignty and territorial integrity. But we and our partners have been clear that there will be a swift and severe response were Russia to further invade Ukraine. In this moment, no one can stand on the sidelines. We must make it clear that an attack on Ukraine is an attack on the sovereignty of every UN member state and the UN Charter, and that it will be met with swift and severe consequences. We continue to believe that the diplomatic table is the only place where responsible nations resolve their differences. That is the only place to preserve peace. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for their statement. I give the floor to the permanent representative of Albania. Thank you, Mr. President. Let me thank you, G. Di Carlo, for another clear and comprehensive briefing to the Security Council on this issue. Albania condemns, in the strongest terms, Russia's decision to recognize non-government controlled areas of Ukraine as independent entities. This is a breach of international law, an affront to the UN Charter, another blatant violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and it puts an end to the Minsk agreements. This act of the Russian Federation is null and void, has no basis, and has no international legal validity. We call on the Security Council and all the United Nations member states to reject and condemn it firmly. Albania reiterates its firm position in support of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Mr. President, less than a week ago, we were sitting in this very room at the Russian initiative to discuss the implementation of the Minsk agreements. Today, we meet at an emergency meeting exactly because of the Russian Federation decision to violate the very Minsk agreements. This is a disrespect not only to the Council and its decisions, but for the entire universal principles of international law Russia is set to respect and protect. The whole world has witnessed how the Russian Federation has continuously worked to undermine the sovereignty of Ukraine and to determine its geopolitical orientation. What happened today is nothing less but a bis repetita of what we have seen in Georgia in 2008 and with Crimea in 2014, meaning an aggression by fabrication of phantom republics. Who is next? Every UN member state should be alarmed and realize, eyes wide open, the consequences of instrumentalization of national minorities as a weapon to undermine sovereign states, threaten regional and international peace and security. We should not accept the made-in-Russia model of destabilization be exported to other parts of Europe or anywhere else. We reiterate our demand for the removal of the military troops from the Ukrainian border and from the occupied territories of Ukraine, including troops disguised as peacekeepers when they are simply aggressors. Albania calls on the Russian Federation to stop its fait accompli policy, revoke its illegal decision and engage seriously and in good faith with diplomatic talks and give a chance to the Minsk agreements. Dear colleagues, this is yet another critical moment for Ukraine. The UN should remain actively engaged and committed together with regional organizations to the right of the Ukrainian people to live in peace and freedom.
We welcome the statement of the Secretary General and echo his call for all relevant actors to prioritize diplomacy to address all issues peacefully as the only way to move forward. And I thank you. I thank the representative of Albania for his statement. I now give the floor to the permanent representative of France. President, I would like to thank the USG for Political and Peacebuilding Affairs for her statement, and I'd also like to thank the Secretary General for his action and for his very clear words. I welcome the presence of Ukraine, and France supported their request for an emergency meeting given the extreme gravity of the situation. France condemns Russia's recognition of the separatist eastern regions of Ukraine. This is not just a further attack on the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine, but it is also a violation of the fundamental principles of the United Nations Charter, of Resolution 2202 of this Council, which endorsed the Minsk agreements, and the commitments undertaken by Russia, which were confirmed at the very highest level these last few days. On the 17th of February, the Russian representative publicly acknowledged before this Council that there is no alternative to the Minsk agreements and that they were the only internationally recognized legal basis to solve the conflict in Ukraine. But today, the reality is quite different. Russia is choosing the path of confrontation in spite of the incessant efforts to achieve a de-escalation over the last few weeks and the last few days, notably by President Macron working with the German Chancellor. We are continuing these efforts, and we call on Russia to match its words with its deeds when it claims to be in favor of dialogue, and to go back on its decision to recognize the separatist entities. With our European partners, we are preparing targeted sanctions against those who took part in this illegal decision. In the context of the heightened tensions on Ukraine's borders, provoked by the strengthening of Russian military activity, we are concerned by this additional step in the destabilization by Russia and by the threat that weighs on European security. France welcomes the restraint that Ukraine has shown in these difficult circumstances. We express our full solidarity with the people and the government of Ukraine. We call on Russia to refrain from any other actions of destabilization, notably those that may undermine the security and the safety of civilian populations and put them in danger. We are particularly concerned by the decision of President Putin to send the army to the separatist territories under the pretext of peacekeeping. This would be another flagrant violation of Ukraine's territorial integrity. President, France will continue to mobilize in support of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Thank you. I thank the representative of France. I now give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking Under-Secretary General Rosemary DiCarlo for her briefing. We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ
ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਰ ਬੋਇੰਗ ਵੀ 787 ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 3 ਉਡਾਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ 22, 24 ਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ USA ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਟੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ USA ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 에ਅਰ ਬਲਬ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DGCA ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਵੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ UNSC ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਤਣਾਅ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਟੋ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲੌਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ TV ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ TV ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਬੰਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਠੱਪ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ UT ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। यूटी पावरमैन यूनियन कल रात 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। रूस 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। रूस ने यूक्रेन के 2 सूबे लुहांस्क डोनेट्स्क ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रूस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਡੋਨੇਟਸਕ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਡੋਨੇਟਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 256 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਤਣਗੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੀਵ 256 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ। ਫਲਾਈਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਰ B787 ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 4 ਉਡਾਨਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ, 27 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ। TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। इमाम मणिपुर बो खुरमजरी राजर्षि भाग्यचंद्र और खोतियान तिल्हो की एक खूबसूरत धरती और इस धरती पर आने का आनंद कुछ और ही होता है। स्वतंत्रता संग्राम से हम सब वाकिफ है।
स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मोइरांग यहां से बहुत दूर नहीं है। इस पराक्रमी धरती के आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है कि इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सचमुच में आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका ये उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की, उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस, मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के
हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों, मणिपुर की माताएं बहनें, यहां के युवा, यहां के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं।
ये वैश्विक महामारी हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी करके रही। इतने बड़े संकट में हमारी सरकार ने मणिपुर का पूरा ध्यान रखा है। आज बड़ी संख्या में मणिपुर के हर गरीब, हर ट्राइबल परिवार को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, वैक्सीन लगी? सबको लगी? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? भाई, हमारी तो सोच यही रही है, हील हो या फिर वैली, सभी जगह समान रूप से वैक्सीन लग रही है। आप कल्पना कीजिए, 2017 से पहले के बंद और ब्लॉकेड के दौर में ऐसी महामारी आती तो मणिपुर का क्या होता? साथियों, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को, यहां के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। आप सभी की सेवा, आप सभी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को, 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है जिसने मणिपुर की महिलाओं, यहां की बहनों बेटियों की आशाओं आकांक्षाओं को समझा और उनके लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मणिपुर में
60,000 से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर पर मालिकाना हक महिलाओं का है। महिला उद्यमियों की सहायता के लिए हमारी सरकार ने 7 जिला मुख्यालयों पर ईमा कैथेल का भी निर्माण किया है। इसका लाभ हजारों महिला दुकानदारों को हो रहा है। घर में बिजली कनेक्शन ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारी मणिपुर की माताओं बहनों को ही उठाना पड़ता था। हमारी सरकार ने राज्य के 1.25 लाख से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा है। उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। घर में गैस कनेक्शन ना होना भी मणिपुर की महिलाओं का जीवन मुश्किल बना रहा था, उन्हें बीमार कर रहा था। ये हमारी ही सरकार है जिसने मणिपुर की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के 1.5 लाख कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं। मणिपुर के गांवों में, यहां के गांवों में रहने वाले हमारी बहनों को पीने के पानी के लिए जो दिक्कत उठानी पड़ती थी, तकलीफ झेलनी पड़ती थी, इसका भी हमें एहसास है। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने हर घर जल ये अभियान चलाया है। ये अभियान शुरू होने से पहले मणिपुर में सिर्फ ये आंकड़ा याद रखेंगे आप, मैं जो आंकड़ा कह रहा हूं याद रखेंगे, जरा जवाब तो दीजिए, याद रखेंगे। मणिपुर में सिर्फ 25,000 घर ऐसे थे जहां पाइप से पानी आता था। कितने? 25,000। कितने 25,000, 25,000। आज भाजपा सरकार बनने के बाद मणिपुर के करीब 3 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंचा है। अब मुझे बताइए, इतने सालों में इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़ी बातें की, लेकिन पानी पहुंचा 25,000 घर में। और हमने 5 साल के भीतर 3 लाख घरों में पानी पहुंचाया। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं, हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी माताएं बहनें शाबाश। अब हमारी सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस सरकार की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो।
वरना कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। साथियों, हमारे लिए मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है। इसलिए बीजेपी सरकार मणिपुर को देश के रेल मैप पर लाई है। जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब रानी गाइडिंग स्टेशन पर पहली गुड्स ट्रेन पहुंची थी, तो जैसे आप लोग खुशियों से भर गए थे, मुझे भी ये काम करने का बहुत आनंद और संतोष मिला था। वो दिन दूर नहीं है जब इम्फाल तक भी रेल आएगी, और ये मोदी है तो पक्का आएगी। आप रेल के जरिए पूरे देश के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। एक कनेक्टिविटी यहां के टूरिज्म सेक्टर को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाली है। देश विदेश के टूरिस्ट जब यहां ज्यादा संख्या में आएंगे, तो यहां के युवाओं को कमाई के ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। साथियों, रेल के साथ साथ मणिपुर में नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले की सरकार में मणिपुर में सिर्फ एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। आज हमारी सरकार करीब 40 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला हाईवे जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो मणिपुर ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा, ट्रेड हब बनेगा। इस बार के बजट में हमने पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना की भी घोषणा की है। साथियों, बीते 5 साल में बीजेपी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स कल्चर
स्पोर्ट्स के कल्चर को और अधिक समृद्ध किया ही है, इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। बीरेन सिंह जी के भीतर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उससे भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। मणिपुर तो मैरी कॉम और मीराबाई चानू जैसे करिश्माई खिलाड़ियों की धरती है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। और आपने देखा होगा, ऐसे ही माहौल के कारण ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाई और बहनों, हमारे जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। बीजेपी सरकार ने इस योगदान को भी सम्मान दिया है। हमारी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें मणिपुर की हर जनजाति का भी गौरव है, उसकी पहचान का गौरव है। हमारी सरकार मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू इनके नाम पर आजादी के जंग का एक म्यूजियम भी बना रही है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट की लंबे समय से चल रही मांग को भी बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, बीजेपी सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास से जोड़ते हैं। मणिपुर के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए मणिपुर भाजपा ने बहुत ही अच्छा दूरगामी मणिपुर का उत्कर्ष करने वाला घोषणा पत्र भी बनाया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्योगों से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक अनेक महत्वपूर्ण वायदे किए गए हैं। और आपको ये पता है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज मणिपुर के 6 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मणिपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ताकत है, बीजेपी सरकार इसको भी प्रोत्साहित कर रही है। यहां की ताकत बैम्बू जैसे पारंपरिक उद्योग भी है। बीजेपी बैम्बू किसानों को, बैम्बू इंडस्ट्री को यहां के एमएसएमई के साथ प्रमोट कर रही है। और आपको याद होगा, बैम्बू से जुड़े कानून में
बदलाव भी हमारी ही सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो मिशन ऑयल पाम शुरू किया है पाम ऑयल के लिए, उसका भी लाभ मणिपुर के किसानों को होगा। साथियों, विकास के इसी मॉडल के लिए आपको पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार यहां बनानी है। आज भी मैं आपकी सेवा ज्यादा कर सकता हूं, उसका कारण आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मणिपुर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है। बंद और ब्लॉकेड के डर और हिंसा के उन पुराने दिनों को अब हमें वापस नहीं लौटने देना है। भाइयों बहनों, आपके बीच में अनेक बार आया हूं। मैं तो शायद गिनती करूंगा तो भी गलत हो जाएगा, इतनी बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था, गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी आता था, आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया तब भी आता हूं। शायद हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हो गए वो सब जितनी बार आए होंगे उससे ज्यादा मैं अकेला आया हूं। अब मुझे बताइए, आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार मुझे बार बार आपकी सेवा करने के लिए यहां खींच करके ले आता है। और मैं ये सेवा करता रहूंगा, लेकिन सेवा को बल देने के लिए मुझे यहां भी मुझे एक डबल इंजन की सरकार चाहिए भाइयों, और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपको बीजेपी को वोट देना है, एनडीए की सरकार बनानी है। भारत ईमानदारी यही करे, मणिपुर ईमानदार यही करे, घूमना में भी हो अमुक कहन्ना खुरमजरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।